A very good morning, class 10th. So today we are going to discuss a very important topic named cross multiplication, that is solving linear equations using cross multiplication method. Till now we have discussed in our previous videos regarding solving the equations using graphical, substitution and elimination. Elimination was a complete video in which we have discussed all the 6 types of elimination. So today is the last topic in our course related to the solving linear equations using cross multiplication. Let's first understand what is this cross multiplication method all about. Let's suppose we have two equations, ax1, let it be a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Now what is this method all about is, please understand, you have to remember one methodology which is called BCAB. BCAB. Okay, BCAB, or you can also remember it as 2, 3, 1, 2. Okay, they both are having the same methodology. Now BCAB says just write x, y and 1. And first write the coefficients of y. That is why it is called BCAB. हम coefficient of y को क्या ले रहे हैं? b ले रहे हैं. So b1, b2. Then coefficient of c, c1, c2. Then a coefficient of a1. तो आपने ऐसे लिखना है कि एक x के इधर आए, एक इधर आए, एक y के इधर आए, इधर आए. a1, a2 and then ends with again b. b से शुरू हुआ, b पे खत्म हुआ. Okay. So what is the next step to do in this question is, like x upon cross multiply कीजिए this into this, b1 into c2 minus b2 or c1 into b2 ऐसे लिख लीजिए is equals to y upon c1 into a2 minus a1 into c2 is equals to 1 upon a1 into b2 minus b1 into a2. So when you will have this kind of equation, what will happen is, you can compare this with this as well as this with this. उससे क्या होगा? These are all coefficients. तो x upon b1 into c2 minus c1 into b2 करेंगे is equal to 1 upon a1 into b2 minus b1 into a2 आ जाएगा. हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो what you will get the value of x as, तो b1 c2 minus c, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन a1 b2 minus b1 a2. ओके, what is the benefit of this is, आपके पास x की वैल्यू आ गई in terms of only coefficients. ऐसे अगर y की बात करें, y should be equal to c1 a2 minus a1 c2 upon a1 b2 minus b1 a2. So this is how you will find both the values of x and y. Let's do a small question to understand the concept more clearer. This is our topic number 6 in the whole assignment, and the question number is 107th. Okay, so it says x plus y is equals to 7 and 5x plus 12y is equal to 7. तो एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में जो कांस्टेंट है हम हमेशा इधर रख लेते हैं टू मेक माय क्वेश्चन मोर इजियर. बट इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग योर कोएफिशिएंट ऑन टू वन दिस साइड. सो x plus y minus 7 is equals to 0. 5x plus 12y minus 7 is equals to 0. So clearly x, y and 1. Let's make the formula. BCAB, coefficients of y 1, 12. Coefficients of c minus 7, minus 7. Constants as such. Coefficients of x 1, 5 and 1, 12. तो याद रखना, जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है. So x upon 1 into minus 7 is minus 7. माइनस फॉर्मूले का
12 7 जा माइनस 84, तो माइनस माइनस बन गया प्लस 84। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू y अपॉन 7 इंटू 5, माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35, फॉर्मूले का नेगेटिव माइनस 7 बन गया प्लस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 12 इज 12, minus 5 into 1 is 5. So 12 minus 5. So what it is there with us is 84 minus 7 is 77 is equal to y upon minus 35 plus 7 is minus 28 is equals to 1 upon 7. Now you can compare the x term with the constant and y term with the constant. Okay. So from here I can say x upon 77 is equals to 1 upon 7. So x is equal to 77 upon 7. So x comes out to be 11. Is it clear? Then y also, y upon minus 28. So I'll just cross a mark. Y upon minus 28 is equals to 1 upon 7. So y comes out to be minus 4. And that is my answer. मैं again repeat कर रहा हूं पूरा concept. सबसे पहला step, वेरिएबल्स x, वेरिएबल y एंड कांस्टेंट एक साइड पे ले आए। देन राइट डाउन द फॉर्मूला b कैप। b कैप क्या कहता है कि पहले y के कोएफिशिएंट्स लिखिए, फिर कांस्टेंट्स लिखिए, फिर x के कोएफिशिएंट्स लिखिए, आफ्टर दैट अगेन b के कोएफिशिएंट्स लिखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस पहले ही था, माइनस माइनस बन गया प्लस, दिस इनटू दिस, 7 5 का माइनस 35, minus 1 into minus 7 minus plus 7 and 1 into 12 minus 5. So compare the x with the constant जो मैंने यहाँ पे शो किया आपको, this with this and then this with this. When you do this, you have this as a straight answer. And mind my words, class 10 students, in the examination, in the board exam, they can directly ask this technique that solve the linear equations using cross multiplication. So please go through it very carefully. And even if you find any doubts, you can ask in the comment box. Anybody can ask me in the comment box, mentioning their phone number also, or you can pen down my number so that you can call me anytime to discuss if any problem you find in the whole video. Okay, my number is 9888527860 or 8360363016. So you can do it anytime. Okay guys, another two questions using cross multiplication. So let's apply b cap straight away. So x upon b cap. Again I don't write this, let's make it a format 1 4 minus 35. आप नोटिस कीजिए पहली कांस्टेंट इधर है minus 65, y 2 and 3 and 1 and y 4. तो जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म. तो x upon minus 65 minus फॉर्मूले का minus a minus minus plus 35 into 4 is 140 is equals to y upon minus 35 into 3 is minus 105 minus minus फिर से plus 65 into 2 is 130 is equals to 1 upon 4 2s are 8. तो आप बिना एरोस के भी आप समझिए 4 2s are 8 minus 3. So x upon 40 and 35 75 and positive y upon positive 25 and 1 upon 5. So x इसको इसके साथ कंपेयर किया, x upon 75 is equals to 1 upon 3. So x comes out to be 25 and y upon 25 is equal, sorry it is not 3, it is 5. Sorry, my mistake. So this becomes 15. Y upon 25 is equals to 1 upon 5. So y comes out to be 5. Is it clear? Quite easy. Guys, if you know the concept of b cap, mind my words, this question is far easier than the other techniques. Let's apply the b cap. So x, y and 1 and coefficients of y are 1 by b and I'll write in this way 1 by b and 1 by b square
minus a plus b minus 2 1 by a and 1 by a square and 1 by b and 1 by b square. So let's formulate the question. X upon this into this and this into this. 1 by b into minus 2 is minus 2 by b. This into this. So minus a upon b square minus minus plus बन गया plus a upon b square and b upon b square gives you 1 upon b. Is it fine? Is equals to y upon minus a upon a square minus 1 upon a minus b upon a square plus 2 upon a. Is it fine? Minus minus plus हो गया ना, and then this into this 1 upon a into 1 upon a b square minus 1 upon a square. So this is there. So let's compare this with this. X upon, तो ये मेरे पास जनरेट हुआ a upon b square minus 1 upon b is equal to, यहां से कॉमन अगर देखा जाए तो I can brought a and b as common, 1 by ab, so 1 by b minus 1 by a. And if you see over here x upon 1 by b कॉमन आ गया, तो it is a by b minus 1. Or you can make it like take the LCM. So x upon b square and a minus b is equals to 1 upon ab, ab as LCM and a minus b. Is it clear? So this leads to, let this is for b, y, and x is equals to, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a minus b over b square into, तो ये नीचे डिवाइड है तो नीचे वाली टर्म्स ऊपर आ गई, a square b square over ये a square b square over a minus b. So a minus b cancel, b square cancel. So therefore x comes at a square. Very very important question guys. तो आ जाएंगे y पे आ जाएंगे y upon, similarly 2 minus 1 upon a minus b upon a square is equals to 1 over, same here ab, a minus b over ab. Okay, so same step ही आ गए यहाँ पे, and y take LCM, a square a minus b is equals to 1 over a minus b over a square b square. To bring this to other side, y is equals to a minus b over a square into a square b square over a minus b. A minus b cancel, a square cancel, so therefore y is equals to. Guys, this question is very very important. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. First step is all same, apply b cap, then by doing the calculations you get a minus b as a common, a square b square, and that cancel each other, so you get as x is equals to a square and y is equals to b square. Let's do more questions of this type. Another question, so let's do it. X upon xy plus y upon xy is equals to 2. So can I write as 1 upon y plus 1 upon x is equals to 2. And if you remember, we used to take, let 1 by y is equals to v and 1 by x is equals to u. So it will be v plus u is equals to 2, and for cross multiplication v minus u
v plus u minus 2 is equals to 0. So that gives me my first equation. और v plus u है तो आप ये भी लिख सकते हो u plus v. Let's make it as a formal one. U plus v minus 2 is equals to 0. Come over here also. X upon xy minus y upon xy is equal to 6. So 1 upon y minus 1 upon x is equals to 6. And you have let the same. So v minus u minus 6 is equals to 0. So let it be v plus यही रहने दो क्योंकि इधर भी v आ गए हैं. ठीक है. So let's apply the cross multiplication using v cap. Okay. So v cap में मेरे पास equations बनी है v plus u minus 2 is equals to 0 and v minus u minus 6 is equal to 0. तो v u and 1 coefficients variables change हो गए हैं. तो v cap में 1 minus 1 u के coefficients minus 2 minus 6 1 1 and 1 minus 1. So v upon minus 6 minus minus plus एक फॉर्मूले का minus 2 is equal to u upon minus 2 minus minus plus 6 is equals to 1 upon minus 1 and minus 1. So v upon minus 8 is equal to u upon 4 is equals to 1 upon minus 2. So therefore v आ गया minus 8 upon minus 2. So v comes out to be 4 and u is equals to 4 upon minus 2. So u comes out to be minus 2. So you have got v as well as u. So let's apply let's find out the value of x and y. So therefore u is equals to 1 upon x. So u's value is nothing but minus 2. So therefore x value is minus 1 upon 2. Is it clear? And v is equals to 1 upon y and v is 4. So therefore y comes out to be 1 upon 4. So this is the answer. Same method, same question हम elimination में कर चुके हैं. Let's bring the same into u and v form. You have found u and v using cross multiplication, and you have found your answer. Let me cross check. Minus half at 1 by 4. So this is question number 116 of your assignment. Another very interesting question number 119. Please understand, it has two equations. The first equation, let's make it as ax plus by minus 1 is equal to 0. But second equation is little tricky, so let's formulate this. bx plus ay, इसका कांस्टेंट पार्ट को अलग सॉल्व कर देते हैं. एलसीएम आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b को खोल दिया, होल स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गए. सो यू हैव गॉट एज bx प्लस ay is equal to 2ab upon this. तो minus 2ab upon a square plus b square is equal to 0. So write it over here. bx plus ay minus 2ab over a square plus b square is equals to 0. So let's apply b cap. So x, y and 1. So coefficients of y, b and a minus 1 and minus 2ab over a square plus b square. And coefficients of x, a and b, and coefficients of y again, b and t. So let's apply the formula. X upon this into this, this into this, b into this, तो बन गया minus 2ab square over a square plus b square minus minus plus a is equals to y upon minus b minus minus plus 2a square b over a square plus b square is equals to 1 upon a square minus b square. So let's find it out. X upon minus 2ab square plus a cube plus ab square
इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन x अपॉन minus 2ab square plus ab square is minus ab square plus a cube is equals to y upon minus a square b plus 2a square b is a square b plus b cube. Oh sorry, इनके नीचे a square plus b square भी है, वो मैं मिस कर गया. अपॉन a square plus b square अपॉन a square plus b square. यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक बार क्रॉस चेक कर लें, बी नेगेटिव तो नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस जनरेट्स एक्स इज अपॉन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस ए कॉमन, तो गिव्स मी बी स्क्वायर minus a square over a square plus b square is equals to y upon, here we have, I'm thinking कि यहाँ पे कोई नेगेटिव जनरेट होना चाहिए, b upon a square plus b square over a square plus b square. So I am bit confused onto this. एक बार दोबारा यहाँ क्रॉस चेक कर ले, माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब आ गया, माइनस बी क्यूब प्लस दिस, तो ये माइनस बी क्यूब है. एंड इफ दिस इज माइनस बी क्यूब, हमने यहाँ पे बी कॉमन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ठीक है, तो अगर ये माइनस अंदर ले जाओ, यहाँ पे क्या बन गया, ए बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेम हमेशा ये ऐसा जनरेट ये सेम करते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो लेट्स नाउ कंपेयर x विद द कांस्टेंट. x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Is it fine? तो ये कट गए, सो x इज इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इज इट फाइन? और वैसे भी ये कट गए, और दिस इज द आंसर. सिमिलरली y को भी कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल्स टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस गेट्स कैंसल्ड, तो y comes as b upon a square plus b square. Let me cross check the answer. Question number 119, a upon a square plus b square and b upon a square plus a square. Last question for this video, and it is, we can again write it in this way, mx minus ny minus of m square plus n square is equals to 0, and x plus y minus 2m is equals to 0. So let's apply b cap. X, y and 1 minus n 1 and minus m square plus n square and minus 2m, and again variables, coefficients of x, m and 1 and minus n and 1. So मेरे पास क्या बन गया है, x अपॉन प्लस 2mn माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर. तो मैं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, माइनस n 1 माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है.
m square n square are n plus 2m square perfectly fine. तो यहाँ पे थोड़ा सा नेचर इनका चेंज हुआ तो is equals to 1 upon m plus n. Is that clear? ठीक है, बन जाएगा. तो x upon इसको मैं लिख सकता हूँ m plus n whole square. m plus n whole square is equals to y upon m square minus n square is equals to 1 upon m plus n. So comparing x upon m plus n whole square is equals to 1 upon m plus n and x is equals to m plus n whole square upon m plus n. So therefore x is equals to m plus n. Understood? And y को चेक करते हैं. y upon y is equals to m square minus n square over m plus n and y can be written as a square minus b square का फॉर्मूला आ गया upon m plus n. This gets cancelled. So y comes out to be n minus n. So clear? So class, now we have done these around 6 to 7 questions during this video, and we have around 30 questions in our assignment till question number 132 of all such types, so that you can practice it well and bring down your problems in the class, in the video conferencing class. And after this video, we'll be starting up with all problem sums, all various types of problems, sums in linear equations in two variables. Thank you.